we'll be talking about the information theory given by Shannon. That is also important. Okay, so that is the third one. That is the third one. Okay, first wala compression ratio, second wala compression factor, third is the information theory given by Shannon. So ये 1 2 3 जो है ना, you can just mention the heading for them as a performance measure. They are the performance measure. Okay, उसके लिए आप नाम दे सकते हो performance measure. So under performance measure 1 2 and 3. So this is the third one. The third one is about, we'll talk about information theory given by Shannon. Information theory given by Shannon. Okay, information theory given by Shannon. So what Shannon says there is a self-explanatory information I of A, that is a self-information of individual letter. Here I have taken the letter as A. Okay, so what is the information content in the letter A? You can take any letter, A to Z, you can take any letter. But what I meant to say that there is some information content in individual symbol or individual letter. Okay, so what is that information which is contained in the individual symbol or the letter? He has said the equation for that, I of A is equals to log of to the base B. The B can be 2. Okay, the base B. Okay, base B 1 upon probability of A. Log of 1 upon probability of A to the base B. So that is the equation given for the information contained in the letter A. This is very important. I of A is self-information. I will write down here. I is nothing but self-information. Self-information content in letter A. Content in letter A. Then what is P of A? P of A is the probability of A. Probability of A. Probability of A is nothing but the occurrence of the frequency of occurrence of A in the message. In the message. Now there is a difference between the message and symbol, or you can say letter. I can say the group of letters or the group of symbols will comprise or will give you the message, or I can say the message consists of group of symbols or letters. Group of symbols or letters. So message comprises of group of symbols or letters, or group of letters or symbols will give you some message. Now there is a difference between them. And whatever I am talking about the symbols or the letters, that is nothing but I of A. That is nothing but I of A. Okay, because I am talking about the symbol A. If you do not like A, you can write down B. There is no harm. There is no harm. So यहाँ पे सिर्फ आएगा probability of B. So I meant to say that the self information contained in the letter A या फिर B. तो यहाँ पे मैंने जैसे B किया तो यहाँ पे भी मुझे B लिखना पड़ेगा. Okay. And it is given by log of 1 upon probability of B to the base B. To the base B. Okay. Now here it can be 2. Okay. How it can be 2, I will explain you further. Now depending upon the information theory given by Shannon, we have fourth one. Now write down the fourth one. And you सर सर मैं एक डाउट पूछूं क्या? हाँ सर अगर मैं सर ये जो लेटर है अगर मतलब सर अगर हम लोग एक सिंगल लेटर कंसिडर करेंगे, अगर हम उसको और ब्रेक नहीं कर सकते मतलब और लोअर लेवल्स पे, तो सर उसका इंफॉर्मेशन कंटेंट तो 100% होना चाहिए ना सर? अभी तक इंफॉर्मेशन कंटेंट की बात ही नहीं मैंने की है. मैंने सिर्फ इतना बताया था कि इक्वेशन क्या है फॉर दिस वन, और मैंने इतना बताया था कि इट इज अ इक्वेशन ऑफ द सेल्फ इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑन लेटर बी दैट इज गिवन बाय log of 1 upon pb probability of b. लेकिन what do you mean by probability of b? That is the occurrence of letter B in the message. The occurrence of letter B in the message. So
self information content is incomplete if it is not related with the message. So whenever I'll be talking about the message, then this will have some importance. This equation will have some importance. How that this equation will get an importance, that is associated with the fourth point. तो ये fourth point मैं बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा. Okay. So let me complete the fourth point, then you will be able to understand what do you mean by this equation. Okay. So the fourth point now, please write down. And you are familiar with that. That word is entropy. That word is entropy. That word is entropy. That word is entropy. That is fourth. Entropy given by capital H. Given by capital H. Given by capital H. So entropy given by capital H. And you are familiar with the equation. Okay. Shall I rub this part? Shall I rub this part? Yes, sir. Okay. I will rub this. And we will see what is entropy. Huffman coding में हमने देखा है entropy. Okay, now we'll see what is entropy means. And the equation for that is what? The equation for that is what? Okay, so H is equals to summation I is equals to 1 to K P of AI P of AI I of AI P of AI into I of AI. Now, even though I have written I is equals to 1 to K, अगर आपको ये नहीं लिखना है, because this is in general, but if you see here, I am specifically talking about letter A. I am specifically talking about letter A. Okay, I am specifically talking about letter A. Okay, now here, if I am talking about the letter APPLE, apple, if I am talking about the word, now this is a message. Now you consider this as a message, even though it is a word, but it will give you the message that I am talking about the apple. And this word apple consists of different letters or different symbols. APPLE. APPLE. Okay. सर हाँ. सर आपका स्क्रीन बहुत ब्लर है, मतलब पिक्सेलेटेड आ रहा है सर पूरा. ओके, मतलब क्लियर नहीं आ रहा है? नो सर. अबे कुछ क्लियर दिख रहा है? सर ऐसे बीच बीच में थोड़ा क्लियर. हाँ पहले से क्लियर है सर. क्लियर है ना? ठीक है. कभी भी ब्लर हो तो मुझे रुकाओ, because there is no meaning proceeding further if the screen is not clear. ठीक है? यस सर. ओके, यू प्लीज स्टॉप मी. अगर कुछ ब्लरिंग आ रहा है या फिर मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है तो प्लीज स्टॉप मी. If I am talking about the word apple, you know that this apple word consists of different letters. So letters are A, P, L, E. So how many symbols are there? I have symbol as A, P is a symbol, L is a symbol, E is a symbol. The occurrence of A is 1 time. The occurrence of P is 2 times. The occurrence of L is 1 time. The occurrence of E is 1 time. So these are the Excuse me, occurrences. sir. हाँ सर वापस ब्लर है सर. अच्छा, ब्लड आ रहा है. ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है पता नहीं. मोबाइल डेटा पे इसको करूँ क्या? हॉटस्पॉट पे? शैल आई ट्राई विद द हॉटस्पॉट? यस सर, ट्राई करके देखिए. ओके, लेट मी ट्राई.
अभी दिख रहा है क्या क्लियर? नो सर, मतलब इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ सर, अभी अभी बराबर है। अभी आ रहा है क्लियर? हाँ सर, अभी एकदम क्लियर है। हाँ सर। ओके ठीक है, मैंने अभी हॉटस्पॉट स्टार्ट किया है, तो हॉटस्पॉट में भी अगर प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताना, मैं फिर वाईफाई पे स्विच करता हूँ। ओके, so I was talking about the word apple. So there are four symbols. A symbol will occur only once, P symbol is occurring twice, L is occurring only once, E is occurring only once. So can I say these are nothing but the probabilities? Now these are the probabilities of the single letter occurring in the word apple, occurring in the word apple. Okay, now this is the equation for entropy. Now यहाँ पे सिर्फ मैंने A लेटर के बारे में बात किया है. Okay, just to explain you, okay. Now ये समेशन कब आता है? ये समेशन कब आता है? When I will take A plus P plus for L plus for E. So this equation will be for A plus the same equation for P plus the same equation for L plus the same equation for E. That is why ये समेशन आता है. लेकिन अगर फॉर सिर्फ मुझे A के बारे में बात करना है, ओके, और एप्पल का भी छोड़ दो और ये समेशन भी छोड़ दो, तो ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट ए नाउ, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट ए, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट ए. सो कैन आई एलाबोरेट दिस, कैन आई राइट डाउन दिस इक्वेशन फर्दर? For safer side, I will take summation. Okay, I will take summation. So it is I is equals to 1 to k. Can I write down P of AI? And as per the information theory given by the Shannon, can I expand this as log of 1 upon probability of A or AI, probability of AI to the base B, Okay, so I have expanded I of AI as log of 1 upon P of AI log of to the base B, So this is my entropy. For example, pay attention here. For example, in a word, I have A1, suppose A2, A3, okay, and suppose the probability of A, if the probability of A is 50%, the probability of A2 is suppose 25%, and probability of A3 is suppose 25%. So whole together it gives me value 1 और 100%. प्रोबेबिलिटी आपकी जब एडिशन करेंगे तभी वो 100 आना चाहिए. ओके, सो आई हैव वन सिंबल एज A1, द सेकंड सिंबल एज A2, द थर्ड सिंबल एज A3, एंड A1 का प्रोबेबिलिटी है 50%, A2 का 25%, A3 का 25%, और जब मैं इसको ऐड करता तो इट गिव्स मी 100%. ओके, नाउ विद दिस थ्री सिंबल्स आई कैन हैव थ्री टर्म्स. One term will be for A1, the second term will be for A2, the third term will be for A3. So what do you mean? What does the significance of entropy now? Entropy will give you the probable average number of bits. The probable average number of bits required to represent any message. Now, what is the message in this? I have already told you that there is a message which comprises of A1, A2, and A3. Now, this message can be a sentence or this message can be a word. To be more specific, I will say this message comprises of a word. और वर्ड में क्या क्या है, कौन कौन से लेटर्स है? A1 है, A2 और A3 है. A1 का प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%. A2 का क्या है? 25%. A3 का क्या है? 25%. So if I know the probability of the particular letter, I can write down the entropy as summation of from I to K. अभी I to K क्या आएगा? यहाँ पे 1 to 3 आएगा, यहाँ पे 1 to 3 आएगा, because I am considering three symbols. And how many terms I will have? Three terms. One for A1, the other for A2, and other for A3. So what I have to write down? I just want to write down the probabilities. I have to just write down the ये तो अपना मेन इक्वेशन है, उसको एक्सपांड होने के बाद ये इक्वेशन है. तो व्हाट आई वांट टू राइट? आई जस्ट वांट टू राइट द प्रोबेबिलिटी. यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी. तो मुझे जब दोनों भी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा और बाकी सबको मैं ऐड करूंगा, आई विल गेट सम नंबर.
और वो आप क्या लिखते हो, उसका यूनिट क्या लिखते हो, बिट्स पर, यस एनीवन, बिट्स पर सिंबल, bits per symbol, bits per symbol. That is a unit for what? Unit for entropy. Unit for entropy. So can I say in general that entropy gives you what? It gives you the probable average number of bits. Probable average number of bits required to represent any message. Average number of bits to represent any message. That is the entropy. That is the entropy given by H. And this is important. हमने अब तक डायरेक्टली ये इक्वेशन लिखा है without the understanding, but this equation is actually what? Probability of A into self information content in A, and self information content in A is given by log of 1 upon PA. अभी मुझे बताओ probability of A, the occurrence of A in a message. तो ये सिंबल का इंपॉर्टेंस कब आएगा, जब वो विथ रेस्पेक्ट टू मैसेज की मैं जब बात करूंगा कि वो लेटर वो मैसेज में कितने बार, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मैसेज में वो कितने बार आया है. और मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल दिया आपको, A1 सपोज 50% में यानी आधे बार आया है, दैट इज 50 मीन्स नथिंग बट हाफ, दिस इज हाफ. Okay, and this is 25 means 1 by 4. Here this is also 1 by 4. So when you add, you will get 1. Okay, so these are the probabilities, and when you get the probabilities, when you add all the terms for A1, A2, A3 and keeping the values of probability, you will get the final answer, which is bits per symbol, and this signifies that average number of bits required to represent any message, to represent any message. I hope you have understood this now for entropy. Okay, so this is important. Okay. Yes, this is important. For D14B students, I have explained them. यहाँ पे कभी कभी निगेटिव भी आता है, तो यहाँ पे जब निगेटिव आता है तो I will explain you for D14A also. यहाँ पे अगर हम निगेटिव भी लेते हैं तो it becomes log of, डायरेक्टली आप log of P of AI लिख सकते हो without the inverse. तो इसी का मतलब सेम ही है. इसका जो भी आंसर आता है ना, इसका जो भी आंसर आता है वो निगेटिव आता है, so that negative into negative it becomes plus. और आप जब 1 upon P of, प्लीज म्यूट योर सेल्फ, कोई तो भी अनम्यूट किया है, आवाज आ रही है. Someone of you have unmuted yourself. Please mute yourself. Okay. So whenever गौरव की तरफ से आवाज आ रहा है, गौरव. Okay. Here, whenever you take the log of 1 upon P of AI, okay, that times it gives you the positive answer. 1 upon अगर करते तो पॉजिटिव आंसर आते हैं, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कुछ नहीं लिखते, लेकिन हम जब यहाँ पे निगेटिव लिखते हैं तो it is log of P of AI, and log of P is the negative answer, so negative into negative it gives you plus. Okay, तो आप दोनों भी याद रखो, there is no harm. लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 1 upon PI लिखा और यहाँ पे माइनस किया. Okay, so that thing should not happen. If it is okay for you, shall I proceed further? Yes, sir. Okay, now we'll move further. Now write down the heading. Now these were the terms. 4 or 5 terms are there which are important as far as data compression is concerned. Regarding the redundancy, regarding the average code length, okay, that is understood. लेकिन entropy जो था, that was it has some significance, so that's why I have taken separately. Okay, I will go for for understanding the other concept. Please write down, all of you write down. Prefix codes, and write down prefix codes and prefix codes and uniquely decodable codes. Prefix codes and uniquely decodable codes. And uniquely decodable codes. Now these are important. You should understand this now.
prefix codes and uniquely decodable codes. Okay, so we'll try to understand the concept of what do you mean by prefix codes and what do you mean by uniquely decodable codes. Decodable important है, हम encodable नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं decodable. हम decode कैसे कर सकते हो और uniquely decode कैसे कर सकते हो. Okay, so we'll see what is the prefix code. Okay, now before you understand the prefix code and the uniquely decodable codes, I want you to write down something about, please write down modeling and codes. Modeling and codes. Prefix codes and uniquely codes के नीचे लिखो modeling and codes. Okay, and write down what do you mean by model. What do you mean by model? Okay, write down what do you mean by model. Please write down first. To devise any compression technique, model के आगे लिखो. We are writing down what do you mean by model. उसके आगे लिखो. To devise any compression technique, we will need first, to devise any compression technique, we will need first some model. We will need first some model. Bracket में लिखो, that is how we are going to compress the file. How we are going to compress the file. How we are going to compress the file. Bracket close. Then bracket close. Then we will involve coding. Then we will involve coding. Then we will involve coding. Okay. Then we will involve coding. उसके बाद लिखो different models. उसमें number 1 लिखो. There are different models. So we will talking about the 4 important in general models. In general, first one लिखो probability model. Probability model. इसमें सिर्फ एक लाइन लिखो. In the probability model, एक लाइन लिखो. On the basis of probability of the messages occur, on the basis of probability of the symbol which will occur in the message. So depending upon the probability of the symbol which will come into the message, you have the model. That model का नाम है probability model. वो model का नाम है probability model. Okay, तो आपने एक sentence में क्या लिखा? On the basis of probability of the symbols occurring in the message. So as simple as it is. Number two, physical model. इसमें भी एक लाइन लिखो. Physical model. Now what do you mean by physical model? Write down one sentence. On the basis of physical characteristics. On the basis of physical characteristics like size, comma, bits, comma, number of bits, etc. So that is a physical characteristics. Okay, that how many bits it is handling, that symbol is handling. Okay, or what is the size of that particular letter. Okay, so depending upon that physical characteristics, we have a model. That model is called as physical model. Okay, that is called as physical model. The third one, Markov model. MARKOV, एक ही वर्ड है वो पूरा. MARKOV, Markov model. Now under the Markov model, there are some discrete Markov chains are there.
Okay, there are discrete Markov chains. On the basis of that, we have the name given as a Markov. That was invented or that was discovered or that was founded by the Markov. That's why उसका नाम दिया है. So you can just write down one sentence on the basis of discrete Markov chain. On the basis of discrete Markov chain. So we are not going to go into the detail of this. We are just try to understand the overview of what do you mean by model. What do you mean by model? मैं एक एग्जांपल दूंगा तब आपको समझ में आएगा कि मॉडल क्या है. Okay. So Markov model, that is on the basis of discrete Markov chain. Okay. Now number four, that is last one, that is a composite source model. Composite source model. तो इसमें एक ही लिखो, using different models, because it is a composite. I can combine any two or I can combine three. Okay, so that is a composite source model. So just write down using different models or using combination of different models. Using combination of different models. Now please pay attention. Please pay attention. I will let you know with an example what is the concept of model. Model का क्या मतलब होता है? और आपने क्या लिखा था? That was the important sentence. आपने लिखा था to devise any comparison technique we will need first. सबसे पहले we have to finalize the model. First, some model has to be finalized. First, model will be finalized. And then we will involve coding कि उसका कोडिंग कैसा करना है. पहले मॉडल फाइनलाइज करो और बाद में कोडिंग करो. दैट इज व्हाई आपने क्या लिखा था ऊपर, मॉडलिंग एंड कोडिंग. तो पहले मॉडलिंग आएगा, बाद में कोडिंग आएगा. मॉडलिंग हमको क्या बताता है कि हम क्या क्या पैरामीटर्स लेके हम मॉडल बना सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे 4 लिख के दिखाया. ओके, आई विल एक्सप्लेन यू द मॉडल विद एन एग्जांपल. ऑल ऑफ यू पे अटेंशन. Now suppose I am writing A, then I am writing B, then I am writing S. Okay, more to S. Okay, now please identify if this is the message I have. I have to encode this message. So the first thing is that I have to finalize the model. Now as looking at this, suppose I want to use physical model. Now physical model क्या बताता है? Your physical characteristics. उसका size, उसका weight, उसका occurrence कितने बार है, everything I can consider. That is a physical model. Okay, the physical model. Even you can also consider, suppose if I am talking about the probability model. Probability model में यही है कि उसका occurrence कितने बार है. Okay, उसका occurrence कितने बार है. Now if I am taking, you can take physical or probability. They will be near about the same. Okay. Now if the model is decided, if the first the model is finalized, then I have to do with the coding. Now coding क्या होगा? See here, the coding क्या होगा? Now A letter कितने बार आया है? 1 2 3 4 5. 5 बार आया है. Okay, 5 बार आया है. So I can just write down the letter A has occurred 5 times. अभी मैं कोडिंग कर रहा हूँ. Letter A has occurred 5 times. Okay, then come to the B now. Now I will write down just B, and B letter कितने बार आया है? It has come only 2 times. Okay, then comes letter S. S कितने बार आया? 1 2 3 4 5 6 7. So it has come 7 times. So I will write 7. So what is this? This is the code which is generated. मैं दूसरा भी कर सकता था. मैं A का अगर ASCII वैल्यू लेता हूँ, it is a 8-bit ASCII value. So 8 8 8 8. So it will be more. So every letter is having the ASCII value. Okay. So how many letters are there?
अगर मैं ए की बात करता हूँ तो ए कितने बार आया है? 5 बार। बी की बात करता हूँ तो वो कितने बार आया है? 2 बार। एस की बात करता हूँ तो वो कितने बार आया है? 7 बार। तो 5, 6, 7 and this 7, 14 into 8, 14 into 8. So number of bits required will be more. Okay, so that model, अभी वो मॉडल डिफरेंट है, वहां पे मैंने क्या किया? कंसिडर, आई एम कंसिडरिंग द ASCII वैल्यू, आई एम कंसिडरिंग द ASCII वैल्यू, सो दैट मॉडल इज डिफरेंट नाउ। ये पर यहाँ पे मॉडल क्या है? एक सिंपल मैंने काम किया है, आई हैव टेकन लेटर ए और मैंने उसके सामने लिखा है वो कितने बार आया है इन द कंटिन्यूएशन, दैट इज 5 टाइम्स। बाद में मैंने बी लिया है, वो कितने बार आया? 2 बार, तो आई हैव रिटन 2। बाद में मैंने एस लिखा है, वो कितने बार आया? 7। तो ये कितने बार मैंने, कितने बिट्स लगेंगे? सपोज ए को लगेंगे 4 बिट्स, 5 को लगेंगे 4 बिट्स, बी को लगेंगे 4 बिट्स, 2 को लगेंगे 4 बिट्स। सो 4 into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 4 सा 24। तो 24 बिट्स आर रिक्वायर्ड हियर। लेकिन यहाँ पे कितने रख रहे थे? 14 into 8, 112 and यहाँ पे 24 bits. So this is just an example that if I have to get the coding, सबसे पहले मुझे ये करना है डिसाइड कि मैं कौन सा मॉडल यूज कर रहा हूँ, ओके। अभी ये जो मैंने आपको बताया ना, दिस इज कॉल्ड एज रन लेंथ कोडिंग, RLE, रन लेंथ कोडिंग, रनिंग लेंथ कोडिंग। ये हम अलग से लेने वाले, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज कॉल्ड एज रनिंग लेंथ कोडिंग। रनिंग लेंथ क्या है? क्योंकि आपका एक मैसेज है जिसमें कुछ लेटर्स कंटिन्यूएशन में रिपीट हो रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं ऐसा लिख सकता हूँ A5, B2, S7। दिस इज हैपनिंग इन द रनिंग लेंथ एनकोडिंग, रनिंग लेंथ एनकोडिंग। सो दिस थिंग आई विल टेक सेपरेटली, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट वंस आई हैव फाइनलाइज्ड द मॉडल, आई हैव टू मेक द कोडिंग अकॉर्डिंगली। तो ये कोड कुछ अलग आया है और ASCII का लूंगा तो वो कोड कुछ अलग आएगा, ओके। सो फर्स्ट कोडिंग होगा, फर्स्ट मॉडल डिसाइड होगा, और with respect to the model which you have selected, you will have the corresponding coding, you will do the corresponding coding, okay। So that is why there are different models, and depending upon different models you have different coding, you have different code, okay। So this was about the modeling and coding. Now come back to the prefix code and uniquely decodable codes now. Shall I rub this part? सर एक डाउट है। हाँ सर वो जो 14 लेंथ का कोड है सर, उसमें आपने हर बिट को एक ASCII वैल्यू होगा सर, इसकी वजह से वो मतलब 8 है क्या? मतलब 8 बिट ASCII है? हाँ, हर एक सिंबल को ASCII वैल्यू में रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स लगते हैं। और मेरे पास टोटल कितने हैं? टोटल मेरे पास 14 है, तो 14 into 8 तो 112 बिट्स लगते हैं। हाँ सर। This is just to give you that this coding method depends upon different model. This coding method depends upon some different models. So in general you have such type of models available. अभी इसी भी मॉडल में एक स्पेसिफिक भी प्रोबेबिलिटी मॉडल में I can take the Huffman coding, जहाँ पे मैं प्रोबेबिलिटी लिखता हूँ ना, I can take the example of Huffman coding here. Okay, there is a RLE also. RLE I can take in physical because physical occurrence कितने बार है वो हिसाब से मैं लिखा हूँ। तो RLE is a specific coding which will come under the physical model. Huffman coding will come under the probability models, because Huffman में हम क्या लेते हैं? हम probability तो लेते हैं, ओके, एंट्रोपी तो लेते हैं हम, तो प्रोबेबिलिटी मॉडल में वो एग्जांपल आएगा हफमैन कोडिंग का। RLE का एग्जांपल जो मैंने दिया वो फिजिकल में आ सकता है। मार्कओव डिस्क्रीट चेनिंग जो आएंगे वो मार्कओव में आएगा। और अगर मैं दोनों को किसी दो को मिक्स करके मैं मॉडल बना रहा हूँ तो वो कंपोजिट सोर्स मॉडल में आएगा। इज इट क्लियर? अगर आपने भी एक अलग से मॉडल बनाया, आपने आपका खुद का नाम लिखा, तो वो मॉडल कहीं ना कहीं इसमें फिक्स हो जाएगा वो। अगर आपने 2 मॉडल बना के एक मॉडल बनाया तो वो इन जनरल कंपोजिट सोर्स में जाएगा, ओके। सो दीज आर इन जनरल आई हैव गिवन यू द मॉडल्स, एंड Huffman coding, RLE, we have LZ. So these are the different coding methods. Model I have, and after modeling, now this was about the model and the codes, model and the corresponding codes. Now we'll talk about the prefix code and the uniquely decodable code.
Now first I will talk about the uniquely decodable code with an example. Okay, with an example. Now all of you pay attention. I am writing down symbol A1, symbol A2, symbol A3 and symbol A4. For symbol A1, the code is 0. For symbol A2, the code is 1. For symbol the code is 1 1. Now these are the symbols. और अगर मैं मैसेज की बात करता हूँ, सपोज एक मैसेज है, उसमें A1 है, A2 है, फिर से A1 है, बाद में A3 है. So can I say A1, A2, A1, A2, A1, A3? So these whole together forms the message. This holds together forms the message. और इसका जो corresponding मैं जो ये लिखूंगा, क्या लिखूंगा? A1 का क्या लिखूंगा? 0, A2 का क्या लिखूंगा? 1, और A1 का फिर से 0, A3 का क्या लिखूंगा? 1 0. और ये जो मुझे मिलता है, can I say this is a code word? This is a code word for the message A1, A2, A1, A3. I will say the code word which is formed from the message comprising of the symbols A1, A2, A1, A3, the code word which is formed is 0, 1, 0, 1, 0. So this is my code word. And what do you mean by code? Code means individual symbol ka code. For example, for A1, 0 is the code. For A2, 1 is the code. For A3, 1 0 is the code. For A4, 1 1 is the code. Okay, 1 1 is the code. Now see here, what is uniquely decodable codes? What is uniquely decodable codes? Okay, pay attention all of you. Now when you talk about this particular symbol and the respective codes, suppose I am taking 1 0 now. ये 1 0 suppose मैं ले रहा हूँ. Suppose I am taking 1 0. Now here the sequence of codes that can be decoded in only one way. The sequence. Now these are the code. These are the sequences. The sequence of codes 0, 1, 1 0 and 1 1 is a sequence of codes that can be decoded in only one way. Decoded in only one way. का मतलब क्या है? Now if I am writing down this 1 0, okay, 1 0. Now this 1 0 can be decoded in two different ways. वो क्या है? एक वे है इधर, दिस इज फर्स्ट वे, और दूसरा वे है इधर, दिस इज सेकंड वे. अभी फर्स्ट वे देखो क्या है. अगर मैं 1 0 लिख रहा हूं, तो क्या ना से अगर मैं पहला बिट ले रहा हूं 1, मैं डिकोड कर रहा हूं, बिकॉज इट इज यूनिकली डिकोडेबल कोड्स, तो आई नीड टू डिकोड नाउ. अगर मैं पहला बिट लेता हूं 1, तो कैन आई से 1 corresponds to A2, so this is my A2, my first way, okay, my first way. If I'm taking first digit or first bit, then it corresponds to A2. If I'm taking the second bit 0, now 0 corresponds to A1, that will correspond to A1. तो मुझे अगर 1 0 को डिकोड करना है, तो मैं डिकोडिंग दो तरीके से कर सकता हूँ. एक तरीका है, इट कैन बी A2 फॉर फर्स्ट एंड A1 फॉर सेकंड. और सेकंड में क्या होता है? 1 0 टुगेदर. 1 0 टुगेदर क्या होता है? A3. Now can I say there are two ways? But if I want the code should be uniquely decodable code, there has to be only one way. Okay. Yes. There should be only one way. So if the code has to be uniquely decodable code, then there has to be only one way. But here, if you see properly, the sequence for 1 0 that can be decoded into two different ways. So this is not a uniquely decodable code. These are not the uniquely decodable codes. Okay, the example I have given to you. Now suppose if you take 1 1 also, okay, तो अगर हम 1 1 लेते हैं, तो पहला 1 will corresponds to A2,
and second one also can be corresponds to A2. And if I'm taking 1 1 together, it will corresponds to A4. It corresponds to A4. Okay, so this is the first way and this is the second way. Okay, so this is the example to explain you the uniquely decodable codes. So which are the codes which are uniquely decodable? Now these are the tests to see whether the codes are uniquely decodable or not. So if I see properly, these are not uniquely decodable codes. So please write down one sentence about this uniquely decodable codes. Write down sequence of codes that can be decoded. The sequence of codes that can be decoded in only one way. सीक्वेंस का क्या मतलब होता है? सीक्वेंस को अंडरलाइन करो, वहां पे भी आपको समझ में नहीं आएगा क्या है सीक्वेंस. सीक्वेंस का मतलब क्या है? पहले मैंने 1 लिया, बाद में मैंने 0 लिया और बाद में मैंने 1 0 कंबाइन लिया. पहले मैंने 1 लिया तो सीक्वेंस है ना, पहले 1 बाद में 0 और बाद में फिर पूरा कंबाइन. ये सब करने के बाद मुझे A2 A1 मिला और बाद में A3 मिला. कंबाइन करूंगा तो A3, पहले 1 लूंगा तो A2, बाद में 0 लूंगा तो A1. सो दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस. तो आपने क्या लिखा? The sequence of codes that can be decoded in only one way, then it is called as uniquely decodable codes. तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल, आई होप यू हैव रिटन दिस. अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिसमें यू कैन से यस इट इज अ यूनिकली डिकोडेबल कोड. ये वाला जो कोड था वो यूनिकली डिकोडेबल कोड नहीं था. Now we'll write down which the code. For example, write down. Suppose A1, A2, A3 and A4. For A1 the code is 0. For A2 the code is 10. For A3 the code is 110. And for A4 the code is 111. 111. ठीक है, अभी मुझे डिकोड करना है. अभी देखो मेरी बात सुनो, डिकोड का मतलब क्या है? सपोज मेरे पास सब ऐसा है. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसमें से कोड नहीं लेता हूं, मैं एक अलग कोड लेता हूं. सपोज मैं ले रहा हूं 100, बट आई विल राइट इन रेड कलर. अगर मैं लिख रहा हूं 100, अभी मुझे देखना है कि 2 रूट होते हैं क्या इसके, फर्स्ट वे या फिर सेकंड वे. अभी यूनिकली डिकोडेबल कोड्स के लिए एक ही वे होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए. अगर 2 है तो यूनिकली डिकोडेबल कोड नहीं है, अगर एक ही है तो यूनिकली डिकोडेबल कोड है. अगर मैं ये ले रहा हूं तो पहले देखो, पहले 1 है, सीक्वेंस में जा रहा हूं 1, वहां पे यहाँ पे 1 कहीं दिख रहा है नहीं. बाद में आई एम टेकिंग 0, okay, so 0 will corresponds to A1 and the other one is also 0, so this is also A1. Now see here properly, if I am going with this, okay, अभी यहाँ पे भी जो सीक्वेंस मुझे देखना है ना, what I will do, I will not form the groups in this way. First I will take 1 दिख रहा है क्या? नहीं. तो I won't jump to second now. एक को छोड़ के थोड़ी मैं सेकंड पे 10 then 10 है क्या? Yes, it is there. It is A2. और ये दोनों अभी डिकोडिंग हो चुके हैं तो उसको फिर से नहीं क्यों कंसीडर करूंगा, तभी मैं नेक्स्ट बिट कंसीडर करूंगा ना. तो इट इज 0, तो 0 corresponds to A1. Can any one of you have different way? Can any one of you have different way other than this? No, sir. एक ही way. This is the only way. So whenever you find only one way, yes, now these codes are uniquely decodable codes. So we can say these codes are uniquely decodable codes. So please write down this example and show this, that only one way we can have, that way it will come under the uniquely decodable codes. So 2 minutes are left. Let me complete the prefix code also. Then the next time I will give you different codes and I will ask you to find out which is a uniquely decodable code. Now this is the one way. Now this is the test to check whether the codes are UDC. Whether the checks are UDC. The codes are UDC. There is another way. There is another way to check the
to check the test whether the codes are UDC or not. This is the one way. This is the one method. I will let you know the other method in the next lecture. Okay, but let me complete the prefix code first. If it is okay, I will rub this and we'll try to understand the prefix code. Prefix code, prefix. तो नाम ही समझ में आ रहा है, कुछ तो prefix है. Okay, something is there, some prefix is there. Okay, I will take an example, small example. I am having two symbols, one is A and the other one is B. If A is given as the code word, code, I will not say code word. There is a difference between the code and the code word. Code word is for the message whole itself, and the code is for the symbol. So for A, the code is suppose given as 010, and for B, the code is given as 01011. 010, and for B it is 01011. If this is the code. Okay. Now please try to understand the meaning of prefix. Understand the meaning of prefix. Now, if I am taking this 01011, ये 5 bit का, ये 3 bit का है. Now, if I am talking about this code now this code can be broken down into different codes. Which codes? मैं bracket में लिख रहा हूँ, curly bracket. See the different codes. It can be 0, it can be 01, it can be 010, it can be 0101, it can be 01011. So can I say the different codes can be formed if I break down into the from the main codes? It can be 0, it can be 01, it can be 010, it can be 0101, and it can be 01011. Now, if you break down these codes, and if one of the codes appears in the next other code symbols, now if you see 010, now can you see there is also 010? So I can say A is prefix of B. 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 Because हम जब डिकोडिंग करने जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि ये सपोज इन द डिकोडिंग इफ आई एम गेटिंग सच टाइप ऑफ सीक्वेंस 010, ओके, और 010 और नेक्स्ट में 11 है, तो वेदर आई शुड डिकोड विद B or I should decode with this first 3 as A. That is the problem I have. So it's better. So that's why the prefix code are the codes in which अगर दो symbols है, there could be many symbols, and the larger code is broken down into different codes. See how I have broken this. पहले एक ही लिया मैंने, बाद में 2 को combine किया, बाद में 3 को combine किया, बाद में 4 को combine किया, बाद में 5 को. मैंने randomly combination नहीं किया है. This is not random combination. Okay, this one I have combined in the sequence. क्योंकि हम जब डिकोड भी करते हैं तो हम प्रॉपर सीक्वेंस में डिकोड करते हैं, हम कहीं पे भी जंप करके डिकोड नहीं करते. आई फॉलो द सीक्वेंस. सो हियर फर्स्ट सिंगल 0, then 01, then 010, then 0101, then 01011. Okay, and when you break down this particular code, and whenever you find that this some code matches with the other symbol codes, then I can say that other code or other symbol is a prefix of B. Is the prefix of B. Okay, and in the next lecture I will let you know with other example that what is the other test to check whether the code is uniquely decodable code. And even we will be able to understand if the code is a prefix code, then that code is also UDC code. I am repeating again, otherwise you can write down. नीचे नोट लिखो, ये होने के बाद एक नोट लिखो. All of you write down the note. Now we have understood what is a prefix code. Now we have understood what is a uniquely decodable code. Now you can just write down the note. You will be able to understand this. The explanation of that note I will give you in the next session. So please write down the note. The note is if prefix code is satisfied. If prefix code is satisfied. यहाँ पे prefix code satisfy हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है. A is prefix of B. A is prefix of B. तो आपने क्या लिखा नोट? If prefix code is satisfied, then
it satisfies the test of UDC. Then it satisfies the test of UDC. Then it satisfies the test of UDC. इसका मतलब अगर प्रीफिक्स कोड है वो, तो वो UDC भी फॉलो सेटिस्फाई करता है. Write down further. Otherwise it is not UDC. Otherwise it is not uniquely decodable codes. फुल स्टॉप, उसके आगे वही लिखो, मैंने जो लिख दिया वही है सेम. प्रीफिक्स कोड प्रॉपर्टी शुड बी फुलफिल्ड. Prefix code property should be fulfilled if the code has to be uniquely decodable code. Now this will be as simple as it is. This will be as simple as it is. आपने क्या लिखा? Prefix code property should be fulfilled or should be satisfied so that it should become uniquely decodable code. Uniquely decodable code. Okay. So we'll stop here. I think attendance has been taken. So if you don't have any questions, you can leave the session. Thank you. Take care. Bye bye. सर. हाँ सर बट यूनिकली डिकोडेबल कोड्स तो सर प्रीफिक्स फ्री होना चाहिए ना.